नमस्कार फ्रेंड्स, कीप लर्निंग विथ एक्सपोर्ट इंपोर्ट मेक इन इंडिया कैंपेन। और आज के इस सेशन में हम सेकंड पार्ट कवर कर रहे हैं, जो कि जॉब रोल एक्सपोर्ट फाइनेंस हेड दिल्ली, कंपनी नेम मैनकाइंड ब्रांड्स। ओके, सो इसके प्रोडक्ट के बारे में आप ऑलरेडी अवेयर हैं, यू कैन सी ऑन द स्क्रीन। तो एक्सपोर्ट फाइनेंस हेड की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एक फार्मा कंपनी में, क्या इसकी स्ट्रेटजी होती है। ओके, सो कुछ पार्ट हमने कवर कर लिया है फर्स्ट सेशन में, और ये जो सेकेंड सेशन है इसमें हम यहाँ से रेगुलेटरी कंप्लायंस एंड डॉक्यूमेंटेशन के यहाँ से कंप्लीट करेंगे। ओके, तो आपको पता है कि एक्सपोर्ट फाइनेंस हेड जो होता है उसको फॉरेन एक्सचेंज का टेक केयर करना होता है, क्योंकि जब भी एक्सपोर्ट करते हैं फॉरेन रेमिटेंस आते हैं, और जो भी फॉरेन रेमिटेंस आते हैं उनके रिस्पेक्ट में हमें बैंक को जवाब देना होता है। इसके अलावा जो भी ड्रॉबैक्स आते हैं उनको उनको रिकन्सिलेशन करना होता है एक्सपोर्ट के अगेंस्ट, शिपिंग बिल के अगेंस्ट, एंड जो भी रोड टेप जो स्क्रिप्ट मिलती है उनको इंपोर्ट में यूटिलाइज करना होता है। ये तो एक बेसिक एक्टिविटी हो गई, लेकिन इसके अलावा कई सारी अदर एक्टिविटीज होती है जो कि जैसा कि हम पहले सेशन में पढ़ चुके हैं। अब बैलेंस एक्टिविटी यहाँ से कंट्रोल करते हैं। ओके, सो बैलेंस एक्टिविटी क्या है? रेगुलेटरी कंप्लायंस एंड डॉक्यूमेंटेशन। सो रेगुलेटरी कंप्लायंस जो होते हैं, गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग जो भी कंप्लायंस है उनको फॉलो करना बहुत ही जरूरी होता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट में। अदरवाइज हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट के अगेंस्ट कई सारे ऑब्जेक्शन लेटर नोटिस रिसीव करते हैं, इसलिए इन कंप्लायंस को फॉलो करना बहुत ही जरूरी है। तो क्या है वो? स्टेब्लिश रीबस्ट इंटरनल कंट्रोल इंश्योरिंग कंप्लायंस विथ फार्मा इंडस्ट्रीज स्टैंडर्ड। जो भी फार्मा इंडस्ट्रीज के कंप्लायंस हैं, जो भी स्टैंडर्ड है, उनको उन कंप्लायंस को इंश्योर करना है इंटरनल टीम के द्वारा। फॉर एग्जांपल आरबीआई गाइडलाइंस, आरबीआई गाइडलाइन के अकॉर्डिंग फॉरेन एक्सचेंज के जो भी रूल्स है, लाइक एक्सपोर्ट करने के बाद एक स्पेसिफिक टाइम में फॉरेन एक्सचेंज आ जाना चाहिए। इसके अलावा फॉरेन एक्सचेंज में एक्ट के जो रूल्स हैं, पेमेंट करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट हमें सबमिट करने हैं उसका पता होना चाहिए। और ग्लोबल ट्रेड रेगुलेशंस के रिस्पेक्ट में जो भी हम पेमेंट फॉरेन से रिसीव करते हैं, तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हमें बैंक में लगाने हैं उसका पूरा नॉलेज होना चाहिए इसके लिए। इसके अलावा मेंटेन एक्सपर्टाइज इन एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंटेशन। ओके, सो यहाँ पे एक लॉजिस्टिक टीम है, एक सप्लाई चेन टीम है, और यहाँ पे आप हो एक्सपोर्ट फाइनेंस हेड। सो आपके अंडर आपको ये मेंटेन करना है कि एक्सपोर्ट के जो डॉक्यूमेंट हैं वो प्रॉपरली एक्सपर्टाइज है कि नहीं है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि जो भी बना रहा है वो करेक्टली बना रहा है कि नहीं बना रहा है, इस टाइप से। फॉर एग्जाम्पल आप बात करें तो एलसी, लेटर ऑफ क्रेडिट, जो कि काफी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट हो जाता है जब भी आप एक्सपोर्ट करते हो और फॉरेन की जो पेमेंट है उसकी श्योरिटी नहीं है कि पेमेंट आएगी या नहीं आएगी, तो यहाँ पे लेटर ऑफ क्रेडिट हम बोलेंगे कि बायर से कि आप एक लेटर ऑफ क्रेडिट खुला दो। इसके अलावा बैंक गारंटी भी होता है, जैसे इंपोर्ट करते हैं तो हमें एक बैंक गारंटी देनी होती है, ठीक है, कि इस एक्सपोर्ट के अगेंस्ट हम ड्यूटी पे कर देंगे। अगर एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन पूरा नहीं हुआ तो इस प्रकार की बैंक गारंटी कस्टमर को देनी होती है। बिल ऑफ लेडिंग की बात करें तो एक्सपोर्ट के टाइम जब शिप पे हमारे कंटेनर चढ़ जाते हैं तो शिपिंग लाइन हमें एक बिल ऑफ लेडिंग इशू करती है। इनवॉइस वो इनवॉइस होती है जो कि कमर्शियली हम जब एक्सपोर्ट करते हैं तो कितने पेमेंट उसके रिस्पेक्ट में आएगी, वो एक बिल होता है। फॉर एग्जांपल कोई भी प्रोडक्ट मार्केट से खरीदते तो हमें एक इनवॉइस मिलता है, ऐसे ही हमें एक इनवॉइस बना के बायर को, इंपोर्टर को देनी होती है, जिसे कमर्शियल इनवॉइस कहते हैं। पैकिंग लिस्ट, जैसा आपको पता है कि पैकिंग लिस्ट में पैकिंग डिटेल होती है कि प्रोडक्ट कैसे पैक किया गया है। इसके अलावा सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन, सीओ जो होता है वो सर्टिफाइड करता है प्रोडक्ट को कि ये प्रोडक्ट इंडिया में बने हैं। ईबीआरसी, जो कि आपको पता है कि जब हम एक्सपोर्ट कर देते हैं और बाहर से जो पेमेंट आती है उसके रिस्पेक्ट में बैंक डीजीएफटी को फॉरेन रेमिटेंस डिटेल भेजता है। लेकिन वो कब भेजता है? जब बैंक को ये पता पड़ जाता है कि ये पेमेंट इस शिपिंग बिल के अगेंस्ट आई है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसा कि मैंने एक सेशन बनाया था जिसमें पूरा एक्सप्लेन किया था कि जब एक्सपोर्ट करते हैं तो हमारी एक्सपोर्ट की शिपिंग बिल की एंट्री कस्टम से बैंक में जाती है, और बैंक में जब तक ओपन रहती है जब तक कि हम उसको कोई प्रूफ ऑफ डॉक्यूमेंट ना दें। तो जैसे ही पेमेंट आती है तो दोनों तरफ की एंट्री को क्लोज करने के लिए एज ए एक्सपोर्टर हमें
डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं, ठीक है। और जब डॉक्यूमेंट सबमिट कर देते हैं और बैंक एक्सेप्ट कर लेती है कि ये पेमेंट इस शिपमेंट के अगेंस्ट आई है, तो फिर ये बैंक ये डेटा डीजीएफटी को सबमिट कर देती है और डीजीएफटी इश्यू कर देती है ईबीआरसी। ऐसे ही ईडीपीएमएस होता है। ईडीपीएमएस इज जस्ट लाइक है, जैसे ही हम एक्सपोर्ट करते हैं तो एक सिस्टम होता है कि जितना भी आईसी एक अकाउंट होता है डीजीएफटी में, कस्टम में और बैंक में, इन तीनों को मिला के होता है ये। तो जब जब हम एक्सपोर्ट कर देते हैं तो होता क्या है कि जो एक्सपोर्ट के जो शिपिंग बिल फाइल हुआ है उसकी डिटेल्स एक एंट्री ओपन हो जाती है, और वो एंट्री जब तक ओपन रहती है जब तक कि उस एंट्री के अगेंस्ट शिपिंग बिल डिटेल्स एक्सपोर्टर बैंक को नहीं देता है। तो इस प्रकार से कई सारी एंट्रियाज होती है जिसकी ईमेल बैंक हमें करता रहता है और पूछता रहता है कि भाई तुमने जो एक्सपोर्ट किया है इसके डॉक्यूमेंट जमा कर दो, ताकि मैं ये पता पड़ पाए कि ये जो एंट्री ओपन है किसके रिस्पेक्ट में। तो इसको कहते हैं ईडीपीएमएस क्लोजर। जो भी एंट्री ओपन होती है एक्सपोर्ट के टाइम उसके रिस्पेक्ट में डॉक्यूमेंट जमा करने को जो प्रोसेस होती है उसको ईडीपीएमएस एंट्री कहते हैं। ओके, ऐसे ही आईडीपीएमएस होता है इंपोर्ट में। ओके, बट हम यहाँ पे सिर्फ एक्सपोर्ट का ये रिलेटेड सेशन है तो सिर्फ एक्सपोर्ट की बात करेंगे। इसके अलावा इंश्योर 100% अदरनेस विद द फॉरेन ट्रेड पॉलिसी स्कीम्स एंड बेनिफिट। तो जो भी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंग हमें जो भी बेनिफिट्स मिलते हैं उसका 100% हमें यूज करना है, उनको एक्सप्लॉइट करना है, कह सकते हैं कि उनको पूरी तरह से यूज करना है। ठीक है, तो कैसे है स्कीम ये? जैसे रोड टैप स्कीम है जिसमें ड्यूटी स्क्रिप्ट हमें देता है एक्सपोर्ट पे जो भी HSN है हमारे प्रोडक्ट का, उसका कुछ परसेंटेज FOB वैल्यू का वो हमें स्क्रिप्ट के रूप में देती है। ऐसे ही ड्रॉबैक, ड्यूटी ड्रॉबैक जब एक्सपोर्ट करते हैं तो जब हमने जो प्रोडक्ट एक्सपोर्ट किया है उसको या तो हमने इम्पोर्ट करके मैन्युफैक्चरिंग की रॉ मटेरियल लेके या फिर डोमेस्टिक रॉ मटेरियल परचेस करके बनाया, तो वहाँ पे हमने कुछ टैक्स दिया था तो उसको गवर्नमेंट वापस कर देती है एज ए ड्यूटी ड्रॉबैक, सो दैट कि आपको एक्सपोर्ट पे कोई टैक्स ना लगे और आपका जो प्रोडक्ट है वो इंटरनेशनल मार्केट में कम्पीट कर पाए। इसके अलावा EPCG का पूरा नॉलेज होना चाहिए। एक्सपोर्ट प्रमोशनल कैपिटल गुड, जो कि एक मशीनरी होती है जो हम बाहर से इम्पोर्ट कर सकते हैं विदाउट पेइंग एनी ड्यूटी, बट उसके रिस्पेक्ट में आपको कुछ एक्सपोर्ट करना होता है। ऐसे ही एडवांस लाइसेंस में हम कोई भी रॉ मटेरियल बाहर से इंपोर्ट करते हैं और उस ड्यूटी फ्री करा सकते हैं। ठीक है, ये रॉ मटेरियल क्या होता है, EPCG मशीनरी के लिए होता है। तो ये जो स्कीम्स है इनका पूरी तरह से 100% आपको बेनिफिट लेना है। ACIS है, सर्विस एक्सपोर्ट का भी आपका यहाँ पे जब भी सर्विस एक्सपोर्ट करते हैं जो इंसेंटिव मिलता है उसका बेनिफिट लेना। ओके, तो ये तो हो गई आपकी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी की स्कीम है उनका बेनिफिट लेना। इसके लिए बात करें डेवलप एफिशिएंसी प्रोसेस फॉर द रियल टाइम डॉक्यूमेंटेशन सबमिशन एंड क्लोजर विद अथॉरिटी एंड बैंक। ओके, देखो सिंपल सा वर्ड में समझे तो आपको ऐसी एक एफिशिएंट प्रोसेस डेवलप करना है जिससे रियल टाइम डॉक्यूमेंट सबमिट हो पाए और जो भी बैंक की एंट्रीज है उनको क्लोज कर पाए। ठीक है, अथॉरिटी और बैंक, जैसे फॉर एग्जांपल जैसा कि हमने यहाँ पे पढ़ा था ना कि ईबीआरसी होता है, आईडीपीएमएस होता है, तो ये उनकी रिलेटेड एक्टिविटी है। इसमें क्या है, जब हम एक्सपोर्ट करते हैं तो उसके रिस्पेक्ट में शिपिंग बिल के अगेंस्ट जो एंट्री ओपन होती है आईडीपीएमएस में उसको क्लोज करने के लिए हमें शिपिंग बिल, कमर्शियल इनवॉइस और बिल ऑफ lading सबमिट करना होता है। तो यहाँ पे ये क्या कह रहा है कि आपको एक ऐसी प्रोसेस डेवलप करना है जिसके थ्रू आप इन इन बैंक सबमिशन के अगेंस्ट जो ओपन एंट्रीज है उनका क्लोजर टाइमली कर पाए, रियल टाइम पे। एक ऐसा आपको सिस्टम बनाना है, जैसे फॉर एग्जांपल हमने आज एक्सपोर्ट किया तो एज एक्सपोर्ट होता है 10 दिन के अंदर अपने 10 या 8 दिन के अंदर अपने बिल ऑफ lading मिल जाएगा। तो जो बिल ऑफ lading आने के बाद आपको जो और डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं इस प्रकार से, यहाँ पे हमें एक कह सकते हैं कि एक लूप लगा देना है कि 8 डेज का, आफ्टर डिस्पैच 8 डेज वी नीड टू सबमिट टू द बैंक। ओके, सो ऐसे लूपिंग लगा के एक एफिशिएंट प्रोसेस डेवलप करना होता है जिससे कि जो एक्सपोर्ट के अगेंस्ट एंट्रीज है वो टाइमली क्लोज हो पाए। ठीक है, इसके अलावा ड्राइव प्रोएक्टिव ऑडिटर्स कंप्लायंस चेक विद मिनिमाइज पेनल्टीज एंड डिले। ओके, आपको इस प्रोसेस को ड्राइव मतलब रन करना, चलाना प्रोएक्टिवली, मतलब आगे बढ़कर। एक तो एक्टिवली एक प्रोएक्टिवली।
एक्टिवली में हम जनरली किसी प्रोसेस को एक्टिवली हैंडल करते हैं, लेकिन प्रोएक्टिवली उत्साहित होगी, डेडिकेशन के साथ हम उसको हैंडल करते हैं। तो ड्राइव प्रोएक्टिवली ऑडिट्स एंड कंप्लायंस, जो भी ऑडिट है, जो भी कंप्लायंस है, उनको चेक करना है, और जितनी भी पेनल्टीज और डिलेज हैं उनको मिनिमाइज करना है। ओके, पेनल्टीज कब लगती है? जब इंपोर्ट करते हैं तो बिल ऑफ एंट्री टाइम से फाइल नहीं करेंगे तो पेनल्टी लग जाएगी। इसी प्रकार से गवर्नमेंट अथॉरिटी में अगर आप लाइसेंस टाइम से नहीं दे रहे हो या उसका यूटिलाइजेशन टाइम से नहीं कर रहे हो तो हर चीज का एक फिक्स टाइम होता है। ओके, अगर आप उसको कंप्लीट नहीं करते तो आपको पेनल्टी देनी होगी। अब यहाँ पे देख लेते हैं की डिलीवरेबल्स। ओके, तो इसके अंदर आता है इंटरनल स्टेक होल्डर अलाइनमेंट। ओके, सो आप यहाँ पे एक्सपोर्ट फाइनेंस हेड को रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो आपके जो पार्टनर्स होंगे वो कौन होंगे? एक्जिम होगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट टीम, सप्लाई चेन होगा, लॉजिस्टिक टीम, रेगुलेटरी अफेयर्स होंगे, बैंकिंग रिलेटेड, ओके, कमर्शियल टीम होगी, ट्रेजरी टीम होगी। इन सब से आपको टाइमली कोऑर्डिनेशन करना है और टाइमली एक्सपोर्ट एजुकेशन करना है। ठीक है, समझने की बात, जैसे फॉर एग्जांपल हम कोई प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले क्या होगी, सेल्स टीम हमें बताएगी कि ये ऑर्डर आया है, आप इस गुड्स को डिस्पैच करवाओ। तो क्या करेंगे हम, जो भी ऑर्डर आया है वो प्रोडक्शन टीम को बताएंगे, प्रोडक्शन टीम मटेरियल्स को प्रोड्यूस करेगी, मैन्युफैक्चर करेगी, फिर क्या है ना, उसके बाद पैकिंग टीम को बताएंगे, पैकिंग टीम उसको पैक करेगी, उसके बाद CHA फ्रेट फॉरवर्ड को बताएगी, वो कंटेनर अरेंज करेगा। इस प्रकार से पूरी एक्टिविटी एक अलाइन प्रोसेस है जिसके जो कि एक दूसरे के ऊपर पूरी तरह से डिपेंड है। ठीक है, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन करना है इंटरनल स्टेक होल्डर से। इंटरनल स्टेक होल्डर जो कि इम्पोर्ट एक्सपोर्ट टीम हो गई, सप्लाई चेन हो गया, जिसमें आपको सप्लाई चेन, आपको लॉजिस्टिक टीम, आपके CHA फ्रेट फॉरवर्ड उनको अरेंज करती है। ठीक है, रेगुलेटरी अफेयर्स, कमर्शियल, और ये सारों से हमें प्रॉपरली अलाइन करना है। तो यहाँ पे ये चीज़ हमें नहीं देखना कि अगर हम इतने सारे डिपार्टमेंट से कैसे कनेक्ट करेंगे, ऐसा नहीं होता। जब कोई ये काम स्टार्ट होता है तो उसमें ऑटोमेटिकली ये टीम्स अलाइन होती है और वो ऑटोमेटिकली आपसे पूछती है कि अब आगे क्या करना है, या आप उनसे पूछते हो कि आगे क्या करना है। तो ये एक चेन है जिसे एग्जीक्यूट करना है विथ हेल्प ऑफ दिस टीम। इसके बाद हम बात करें सपोर्ट प्रोडक्ट लॉन्च इन द न्यू इंटरनेशनल मार्केट। ओके, जो भी नया प्रोडक्ट लॉन्च होता है उसमें सपोर्ट करना है। ठीक है, इंटरनेशनल मार्केट में विद फाइनेंशियल स्ट्रक्चरिंग एंड फिजिबल स्टडीज। ओके, सो यहाँ पे देखो एक वो सब्जेक्ट होगा इंटरनेशनल बिजनेस में, इंटरनेशनल इन्वायरमेंट। इंटरनेशनल इन्वायरमेंट को समझने की अगर बात करें तो वहाँ पे पूरे इन्वायरमेंट को समझाया जाता है कि कौन सा प्रोडक्ट किस कंट्री में चलता है। तो इसे यहाँ पे बस फिजिबल स्टडी करना है उस एरिया को कि ये प्रोडक्ट वहाँ के लिए ठीक है कि नहीं है। तो यहाँ पे कई सारी चीजें आ जाती हैं जिसमें और भी लोग साथ रहते हैं और वो करते हैं इस चीज को। ठीक है, तो इसमें और अलग से एजेंसी भी हायर करते हैं, वो पता लगाती है इन चीज़ों का। इसके अलावा बात करें तो बिल्डिंग स्टॉक कोऑर्डिनेशन विद लीगल एंड टैक्स टीम फॉर द क्रॉस बॉर्डर टैक्स स्ट्रक्चरिंग एंड द एक्सपोर्ट इंसेंटिव। ओके, तो यहाँ पे आपको कोऑर्डिनेशन किससे करना है? लीगल टीम से और टैक्सेशन टीम से। किस लिए करना है? जो भी हम क्रॉस बॉर्डर एक्सपोर्ट करते हैं उसके टैक्स स्ट्रक्चरिंग के लिए, टैक्स स्ट्रक्चर जो होता है उसके लिए। इसके अलावा एक्सपोर्ट के जो भी इंसेंटिव होते हैं उनके लिए। ठीक है, अगर हम बात करें मेंटोर एंड अपस्किल टीम्स मेंबर ऑन द एक्सपोर्ट फाइनेंस प्रोसेस, तो अपनी टीम को मेंटोर करना है, उसको अपस्किल करना है, एक्सपोर्ट फाइनेंस प्रोसेस के बारे में बताना है। इसके अंदर आता है ट्रेड फाइनेंस इंस्ट्रूमेंट एंड कंप्लायंस रिक्वायरमेंट। जो भी कंप्लायंस रिक्वायरमेंट उनको बताना है कि आपको ये एक्टिविटी इस टाइम पे करनी है, ये गवर्नमेंट की जो स्टेट्यूटरी पेमेंट्स होती है वो टाइमली करनी है, कस्टम ड्यूटी की हो गई, इस टाइप की GST हो गया और कई सारी चीज़ें। तो इन सारी चीज़ों को हमें उनको बताना है कि ये इनकी जो भी रिक्वायरमेंट होती है उनको समझा के इनको मेंटोर करना है टीम को। इसके अलावा एक्सटर्नल स्टेक होल्डर की अगर बात करें तो यहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा स्टेक जो है वो क्या है, जो आपका एक्सटर्नल, जिसमें अदर कंपनी आती है, इंटरनल में हमारी खुद की कंपनी होती है। तो यहाँ पे एक्सटर्नल स्टेक होल्डर कौन है? डेवलप एंड डेवलप एंड नर्चर स्ट्रेटेजिक रिलेशंस विथ बैंक। ओके, यहाँ पे आपको एक रिलेशन बनाना है, स्ट्रेटेजिक रिलेशन बनाना है। स्ट्रेटेजिक मीन्स की एक, जैसे फॉर एग्जांपल मैच होता है तो उसमें एक फील्डिंग स्ट्रेटजिक ऐसे फील्डिंग सेट की जाती है कि कौन से बंदे को कहाँ लगना है। इसी प्रकार से यहाँ पे आपको SOP बनाना है, स्पेशल प्रोसीजर बनाना है, स्टैंडर्ड प्रोसीजर, जिसके थ्रू आपका जो टाइम जो वर्किंग है उसको फ्रेम आउट कर पाए, उसको टाइमली कर पाए। तो एक स्ट्रेटजिक रिलेशन डेवलप करनी है विद SOP, किसके साथ? बैंक के साथ, CHA के साथ एंड ट्रेड फाइनेंस पार्टनर के साथ।
इसके अलावा एक्सपोर्ट क्रेडिट एजेंसीज के साथ, ठीक है, एक्सपोर्ट क्रेडिट एजेंसी कौन सी होती है, जो कि एक्सपोर्टर्स को लोन प्रोवाइड करती है। जब एक्सपोर्टर अपनी पेमेंट लगा के एक्सपोर्ट करता है तो जो पेमेंट वो कई दिनों में आती है, तो इसलिए उसे फाइनेंस की जरूरत होती है। ठीक है, इसके अलावा कस्टम अथॉरिटी के साथ आपको रिलेशंस डेवलप करने हैं, ठीक है, नर्चर स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट करना है आपको। इसके अलावा एक्टिवली इंगेज विद डीजीएफटी, डीजीएफटी के साथ आपको लाइसेंस इशू कराने के लिए, कस्टम के रिलेटेड कोई क्वेरी उसके लिए, ईओडीसी के लिए, कई सारी एक्टिविटी थी एक्सपोर्ट में, आपको पता होगा लाइसेंस इशू कराना, ठीक है, जो कि इंपोर्ट के टाइम इंपोर्ट यूज होता है। उसके बाद इसको एक्सपोर्ट करने के बाद जो आपका शिपिंग बिल के रिस्पेक्ट में जितना भी एक्सपोर्ट हुआ, इससे एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन के लिए आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं। उससे आपको एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन सर्टिफिकेट मिल जाता है कि लाइसेंस का आपने पूरा यूटिलाइज कर लिया है, उसका एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन भी पूरा कर लिया, तो उसके लिए डीजीएफटी से आपको अलाइन करना है। इसके लिए एक्सपोर्ट प्रमोशनल काउंसलिंग और गवर्नमेंट एजेंसीज टू लेवरेज इंसेंटिव स्कीम एंड पॉलिसी, तो इसका भी हमें कोऑर्डिनेट करना है। इसके लिए negotiate competitive trade finance team with financial institutions to optimize working capital and credit utilization। तो ये जो आपने देखा कि स्टेक होल्डर है एक्सटर्नल, इनसे काफी हमें रिलेशंस डेवलप करने होते हैं, क्योंकि इनके बिना मतलब इनके बिना हमारी जो एक्टिविटीज है वो रुक सकती है। तो उनसे एक्टिविटी को पूरी तरह से चलाने के लिए हमें एक रिलेशन डेवलप करना होता है। यहाँ लिखा है कि नर्चर स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप, इसका मतलब है कि आपको उनसे एक रिलेशनशिप डेवलप करनी है ताकि वो आपका काम टाइमली करे, उससे कंपनी का लॉस ना हो। ठीक है, तो गाइज हमने ये देखा कि इस सेशन का जो सेकंड पार्ट है वो काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें कई सारी एक्टिविटी आती है जो कि एक्सपोर्ट फाइनेंस हेड को करनी होती है। नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्सपोर्ट इंपोर्ट मेक इन इंडिया कैंपेन, एंड दिस इज द सेकंड पार्ट ऑफ द सेशन in which we are just covering the job role of the export finance head. Okay, so the company's names Mankind Pharma is hiring for the export finance head. Okay, as you are already aware with that, what are the requirement for this job and what are the product belong to this job role, belong to this company. Okay, so these are the basic product we can see in the daily life. Okay, so for these Mankind Pharma organizations, the person required as a export finance head. Okay, so first part of this session we already covered. Okay, and in this session we are covering the second part. Okay, so here regulatory compliance and documentations. Okay, regulatory compliance and documentation. So here you have to establish the robust internal control ensuring compliance with the pharma industry standard. So whatever pharma industry standards are provided by the company, we need to ensure the compliance related that. Okay, so what kind of pharma industry standard, these are depend on the company to company. Okay, if you are working in the manufacturing company, okay, then you have to work with the export manufacturing company like engineering product. So under this you have to work with the EPC, okay, engineering product related. But here the company is a pharma, so you have to follow the instruction of the pharma company. Okay, which can depend on regulation of the government. Okay, other than RBI guidelines, need to follow RBI guideline related to payment. Foreign Exchange Management Act. Okay, this is the act in which foreign inward and outward remittance is maintained by the government, and government has developed the rules and regulation for this act. Okay, and the global trade regulations. So these both are depend on the our country government, but this is depend on the other country government. Global trade regulations. Okay, you know that there is the Incoterms, payment terms, which is fixed by the International Chamber of Commerce. Okay, so these are the global trade regulations. Okay, then maintain expertise. Okay, maintain expertise in the export documentation like LC. Okay, so what is LC? LC in the time of export, if we don't have a surety of the payment we'll receive from the buyer, then we
we have to ask to buyer to open a LC in favor of the our company, means Mankind Pharma company. Okay, then bank guarantee. Okay, bank guarantees. What is bank guarantee? Bank guarantee is the we need to give the guarantee to the customer. Whatever the compliance related to that activity need to fulfill in a specific time. Then below pledging. When we export the goods, shipping line issue the below pledging. Okay, so this below pledging need to submit for the payment. Then commercial invoice. When we export, we need to recover the payment from the overseas. So we need to prepare the commercial invoice. For example, any product we buy from the market, so we receive the invoice. In the same way, we are exporting this good, we are selling this good to buyer of the other country. So that we need to prepare the commercial invoice. Then packing list is the document which contain the details regarding packing of the goods. Then certificate of origin. This document will issued by the Chamber of Commerce of the India and explain that this product is made in India. EBRC. EBRC is very important document which is issued by the DGFT. Okay, government organization. Okay, but what is this? This is the EBRC is the bank realization certificate. Means that when we export the goods, okay, and as per the payment terms, we receive the payment from the overseas. Okay, so this payment is in the bank and bank will ask to the exporter, means ask for the Mankind Pharma that for what this payment receives. So here Mankind Pharma will give the details regarding the payment, that this payment is received in respect of this invoice. So if bank is satisfied, then bank will submit this data to the DGFT and DGFT issue the EBRC, means that payment of the shipment is received and exporter can take the benefit of the incentive in other activities. Then EDPMS. Okay, so this is the EDPMS, the procedures which maintain the data related to the export. Okay, just like we export the goods and the export shipping will generate the entry from the custom and this entry will open the bank, and when we submit the document to the bank, then this entry will close. Okay, then 100% awareness and foreign trade policy schemes. Okay, here 100% you have to follow the foreign trade policies, schemes, rules and regulations and benefits. So first you have to RoDTEP, follow the RoDTEP, how to get the benefit of the RoDTEP. RoDTEP is the scheme in which when we export the goods, as per the HSN of the product, the percentage amount of the percentage in based of FOB value received in exporter favor as a script which can be used in the custom duty payment and can be forwarded to the other exporter. Then duty drawback. So duty drawback is the drawback in which when we export the goods, before this activity exporting the goods, we have to manufacture this good, and for the manufacturing process we need the raw materials. Okay, so for the buying this raw material we have to pay the GST to the government of India. Okay, so when we export this product after manufacturing, the tax and GST we paid at the time of raw materials, the government will refund as a duty drawback. So you have to take this benefit. Okay, so for taking this benefit, you need to mention in the shipping bill that we are intent to claim this drawback. Okay, so here we are just covering the 100% awareness of the foreign trade policy schemes. Okay, so these are the schemes which are covering RoDTEP, drawback. Then EPCG, the export promotional capital goods. So this is the license which provide to the exporter duty free schemes. Okay, under this you can import any machinery from overseas without paying any duty, but in respect of that duty free you have to export 6 times of the value duty free in the 6 year. Okay, so here government is asking for the foreign remittance. Okay, government is promoting the export by giving this license. In the same way, advance authorization.
So when we import any raw material from the overseas, government provide the advance authorization. Under this we can free the duty, but this is the raw for the using the raw material. In the same way, ACIS scheme, when we export the service, we incentive receive from the government under this ACIS scheme. So these are the foreign trade schemes and benefits. Okay, so as a export finance head, you have to take the benefit of this. Then develop efficient process for the real time documentation, submission and closure of with authority to the bank. Okay, here you need to develop the process. Okay, for what? To submission of the documentation of the authority of and government authority, government authority and bank. For what? To closure export related entries. Okay, so how you can develop this? Okay, the process need to develop from your side as export finance head. Like, how can you timely submit the document for the closing the bank entries? Okay, so for example, you are exporting the product, and after exporting, within 8 or 10 days you receive the bill of lading. So you look this date of the 8 days from the export. Immediately after receiving bill of lading, you need to submit the document to the bank. Okay, so in this way you can process this real-time documentation submission to the bank. Okay, then proactively drive proactively auditors compliance check to minimize penalties and delay. Okay, whatever process of the government we need to follow, otherwise we need to pay the penalties and delay of the shipments. For example, we importing any product from overseas and not we are not filing the bill of entry on the time as per government given times, then government will penalize keep penalty us. Okay, so under this the shipment will also delay because we are not filing bill of entry. So government custom will not out of charge the shipment. So in this our shipment will delay. So here you need to drive a proactively audit how you can frame this working. Okay, and whatever the compliance we need to check to minimize this. Okay, so guys, this is the regulatory compliance documentation and documentation, and in this there are how to you can align with the internal stakeholder. So what are the internal? The company under companies department are the internal stakeholder, and who are the external? External is that out of the company, like bank and government authority. But these are the internal. So you need to partner with EXIM team, export import team. Okay, as a export finance head, you need to partner with the EXIM team, supply chain. Okay, so EXIM team is that export the product and supply team, whereas the transport regulatory affairs teams, commercial teams which related to commercial business, and treasury team which arrange the fund for the smooth and timely export execution. Okay, you need to align with this internal stakeholder for timely export execution. Then support product launch in the international market for the with the financial structuring and feasible studies. Okay, as an export finance head, you have to support for the product launch schemes in the international market. So for that you have to work with financial structuring and feasible studies because companies investing in other country. So you need to prepare the financial structure and feasible study that if this product will not run in other country, how this investment will be recovered, or how if we investing this fund in overseas, so if what company will not get benefit. So here feasible study is required as a finance expert finance head. Okay, then you need to building stock coordination with the legal and tax team for the cross border taxation structuring. Okay, then export incentive. Okay, so these are the activity in which you have to align with the legal and tax team for whatever the cross border tax structuring we need to discuss. Okay, and also export incentive benefit need to be exploit. Okay, then mentor and up skill to the team mentors the export finance process. Okay, so you have to mentor
and upskill your teams members. What is the export finance process to improve your internal process? Okay, under this the trade finance instrument. Okay, whatever the trade finance instrument available, you need to intimate and you need to upskill your team that whatever benefit need to be available to the company. Okay, then compliant requirements. So whatever compliance need to follow and arrange. Then after the internal stack alignment, we need to means that export finance head need to connect with the external stakeholder and management. So who are these? So for the external stakeholder, you need to manage and develop and nurture strategic relationship with banks, CHS, trade finance partner, export credit agencies, and custom authority. Okay, so here clearly mentioned, develop and nurturing the strategic relationship means you have to nurture the strategic relation forward to timely work with external stakeholder. Okay, internal stakeholder can be managed easily because these are the internal and we can give pressure for the upper management. Okay, but in external, these are the government authorities, so we cannot pressurize these agencies and that. Okay, to work timely and process your internal process timely submission of document or whatever. For this you develop and nurture the strategic relation with the, for example, bank. Okay, if you are not good relation with the bank will not support in submission of the document. For example, you have submit the bank document against the payment received from the overseas, but if relation is not good, then bank can send any email of the error of the wrongly document. But if your relation is good, then bank person will call you that please correct this mistake. Okay, in the same way you need to develop with a relation with the CHA, trade finance partners. Okay, and the export credit agencies. These are the agencies which provide a fund to the exporter as a finance, because the reason behind that, exporter export the goods. Reason behind that, exporter export the goods by investing the lot of money, but at the time payment will receive 120 days after export, 180 days after export. So to complete this fund requirement, this export trade finance partner, export credit agencies will provide fund. So we need to develop the good relation with it. Okay, then same custom authority. Okay, you need to, if you go to custom and your behave is not good, then that company, that custom will see as a company to you, just like I am a person went for the custom from the Mankind Pharma. So if I do any wrong activity in the custom, then the Mankind Pharma will impact. Okay, so here the you need to nurture a strategic relation with this Mankind Pharma, from the Mankind Pharma side of the from Mankind Pharma to the custom. Okay, then actively engage with the DGFT. Okay, this is the government agency which provide the license, which we covered in last page. Then export promotional counseling, government agencies leverage incentive scheme and policy support. Okay, so you actively engage with this department. These are the external stakeholder. You also need to negotiate competitive trade finance. Okay, terms. Competitive trade finance terms. Financial institutions optimize working capital and credit utilization. Okay, so these are the activity under this. You need to negotiate with the competitive trade finance terms. Okay, whatever the trade finance agency available, you need to take out which one is the best. Okay, okay, with financial institutions to optimize working capital and credit utilization. So these are the scheme, these are the process in which you have to align with external stakeholder. Okay, so in this session we have tried to understand what are the key activities belong to export finance head. Okay, so guys, thanks for watching the session. Have a nice day.